Hello my dear students, welcome to Kids English School online classes. So this class is for 2nd standard. Introduction part is for you all. Already video has been uploaded. Now at this part you just have to read it. The main thing you have to carry is your notebook and your pencil. Okay, so while watching this lecture you have to carry notebook and pencil with you. So let's start our today's topic. That is, today's lecture is on English. The name of the chapter is The Monkey Orchestra. Okay, what do you mean by orchestra? Orchestra means a band of music. ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता? ऑर्केस्ट्रा मीन्स कि जो पीपल एक 3 to 4 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ मिलकर बजाते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्केस्ट्रा. दे मेक अ म्यूजिक. वो क्या बनाते हैं? प्लीजेंसी म्यूजिक इज नोन एज ऑर्केस्ट्रा. सो फर्स्ट लेट्स कंप्लीट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. वी विल आइडेंटिफाई द नेम्स. मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज दिस. सो फर्स्ट इज योर ड्रम. Yes, next is your piano and the third one is guitar. So what is how you will spell drum? Just you have to focus on the pointer. आपको सिर्फ इस pointer पे focus करना. You can see this pointer, right? Red in color. आपको ये pointer दिखाई दे रहा है. You have to focus on that. So first picture is D. Yes, R U M, drum. It is the picture of drum. Next is piano. P I O N E, piano. Next is guitar. G U I T E R, guitar. Okay, so these are the 3 instruments: drum, piano and guitar. So let's start the chapter. The worksheet which is given to you, take the worksheet with you all. जो worksheets आपको दी गई है वो worksheets आप आपके साथ रखेंगे. Just focus on the word which I am reading. आपको वो word पर focus करना है जो मैं read कर रही हूँ. Okay, so first is your word is Mowgli. Okay, MOWGLI, Mowgli was a little LITTLE, little BOY, boy. WHO, who, LIVED, live, INN, THE, JUNGLE. Mowgli was a boy who lived in the jungle. Who was Mowgli? Mowgli was a boy. And where he used to live? He used to live in the jungle. Mowgli एक लड़का है और वो कहाँ रहता था? He used to live in the jungle. वो जंगल में रहता. So we know in jungle wild animals live. Wild animals like tiger, okay, lion. Just a second. You can see the pointer. No? Sorry. Yes. So Mowgli was a little boy who lived in the jungle. One day he was walking through the jungle. What happened one day? One day he was walking through the jungle. वो जंगल में walk कर रहा था. Singing a happy song. He was singing a happy song. मतलब एक pleasant सा एक अच्छा सा song वो गा रहा था. On the way he met his friend Bhalu the bear. So who was his friend? Bhalu was his friend, the bear, and Bhalu was a bear. You can see the Bhalu in the picture. Yes, this is Bhalu and this is Mowgli.
both of them, वो दोनों क्या कर रहे थे? They were walking and singing songs, and they were singing song in the jungle. What a beautiful song, said भालू. What did भालू said? भालू ने क्या बोला? कितना beautiful song है, कितना खूबसूरत song है, इतना beautiful song है. It is sad that there is no music to go with it. सिमला, oh it is very sad. ये तो बहुत बुरा है कि हम गा तो सकते हैं लेकिन हमारे गाने के साथ क्या नहीं है? म्यूजिक नहीं है. म्यूजिक अलग अलग साउंड्स इंस्ट्रूमेंट्स के वो नहीं है जो हमारे सॉन्ग को और हैप्पी और प्लीजेंट बना दे. इफ देयर वॉज इट वुड बी रियली नाइस. अगर ऐसे होता, अगर प्लीजेंट सॉन्ग, प्लीजेंट आवाज़ रहती है, हमको म्यूज़िक मिल जाती तो हमारा सॉन्ग और भी क्या होता? ब्यूटीफुल हो जाता और भी अच्छा लगता. नाइस, अच्छा, इट लुक गुड टू, इट गुड टू लिसन, मतलब हमको सुनने में क्या होता? और भी अच्छा लगता. नेक्स्ट, सडनली देयर वॉज अ साउंड फ्रॉम द ट्री अबव द. सो अचानक, सडनली मीन्स अचानक क्या हो? उनको एक आवाज़ सुनाई दी. साउंड मीन्स आवाज़. फ्रॉम द ट्री, ट्री के ऊपर से. भालू एंड मोगली लुक्ड अप. वो दोनों ने क्या किया? दे लुक्ड एट द ट्री. इट वॉज द मंकीज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. मंकीज वे स्क्रीमिंग, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे एंड शाउट कर रहे थे. द मंकी ऑलवेज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज. मंकीज हमेशा क्या करते? बहुत नॉइस करते, बहुत आवाज़ें करते, बहुत नॉइस क्रिएट करते. एक दूसरे को, एक वन ट्री से अनदर ट्री ट्रांसफ़र करते, मतलब एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करते रहते. सो दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. वी हर्ड यू, दे चैटर्ड. उन्होंने क्या बोले उन लोगों को? कि हमने आपको सुने हैं. मीन्स वी हर्ड यू. हर्ड मीन्स सुनना, लिसन करना. दे चैटर्ड, दे सेड द मोगली एंड भालू, कि हमने आपको सुने कि आप दोनों क्या बात कर रहे, क्या चैट कर रहे हो. ओके, वी विल प्ले म्यूजिक फॉर यू. हम आपके लिए क्या करेंगे? म्यूजिक प्ले करेंगे. वी वुड बी वेरी हैप्पी, सेड भालू. भालू बोला, इट्स वाओ, इट्स वेरी गुड. अगर द मंकीज ऑलवेज मेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक. वी हर्ड यू, दे चैटेड. वो लोगों ने क्या बोले? कि हमने आपको सुना है. एंड वी हर्ड योर चैटिंग, जो आप बात कर रहे हैं हमने सुना. एंड वी विल क्रिएट अ गुड म्यूजिक फॉर यू. वी विल प्ले म्यूजिक फॉर यू. वी विल बी वेरी हैप्पी. वी WEV विल बी वेरी हैप्पी, सेड भालू. व्हाट डिड भालू सेड? कि हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे लिए म्यूजिक प्ले करेंगे. एंड वी विल बी वेरी हैप्पी. बट हाउ कैन यू? You do not have any guitars, drums or any other musical instruments. तो वो क्या, आप कैसे प्ले कर सकते हैं? How you will play? बिकॉज आपके पास तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. ना आपके पास ड्रम, गिटार है, ना ड्रम है, ना ही कोई और इंस्ट्रूमेंट. तो आप म्यूजिक कैसे प्ले करोगे? द मंकीज जस्ट लाफ. व्हाट डिड मंकीज डू? मंकीज हंसने लगे. दे स्टार्टेड लाफिंग. We do not need any of them. हमें, what did monkey said? कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. They cried and jumped over to an old hollow log that was lying on the ground. So ऐसे उन्होंने बोले, they said that we don't need any instrument, and they jumped on a hollow log. Hollow log means एक झाड़ का ट्रंक जो हॉलो, जो खाली रहता है, एम्प्टी, उसके अंदर कोई वुड नहीं प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे हॉलो. ओके, एम्प्टी. सपोज दिस इज अ बॉक्स और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी बॉक्स. ओके, एम्प्टी बॉक्स इज नोन एज हॉलो. एनीथिंग विच इज एम्प्टी इज नोन एज हॉलो. जो भी चीज़ एम्प्टी रहती है हम उसको क्या बोलते हैं? हॉलो. ओके, लॉग मीन्स अ पीस ऑफ वुड. लॉग मीन्स पीस ऑफ वुड. That was lying on the ground. जो ग्राउंड पर क्या था? लाई कर रहा था. It was on the ground. And what did monkeys do? Monkeys, they hit it with their hands and made a nice sound. What did monkeys do? Monkeys hit the
log with their hands and made a nice sound like dub dub. They started hitting like this. Okay, so and it created a nice sound. जैसे हम टेबल को हिट करते तो एक साउंड प्रोड्यूस होती, वैसे ही वो उन्होंने क्या किया, वुड को हिट करके मतलब वुड को बीट करके एक न्यू और गुड एकदम प्लीजेंट नाइस साउंड प्रोड्यूस करें. Some of them brought some dried cards with seeds in them and started shaking them like rattles. So, what do you mean by rattles? कुछ monkeys ने क्या किया? Some monkeys brought dried cards, okay, with seeds in them and started shaking them like rattles means हम हमारे पास toys रहते, right? The toys which makes noise like हम उसको हिंदी में like we call it झुनझुना. So they are known as rattles. So they when we shake it, जब हम वो toy को shake करते हैं, it causes sound. So it is known as rattle. Chuck, chung, chung. Okay. Some of the tied some long plants to a couple of branches and began playing them. So some monkeys, what they tied a branch to two of the trees. दो trees को वो क्या करते हैं, एक branch join किया उन्होंने and they started making a sound tung 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 like a guitar. Okay, so guitar में strings रहते, right? You have seen guitar here. Okay, so I will show you the guitar again. This is your guitar. So these are the strings. ये जो आपको lines दिख रही, these are the strings. So हम जब ये strings को move करते, it creates a sound. In the same way, monkeys also created a sound. तो उन्होंने गिटार की जगह क्या use किए? Two trees and they tied the trees with the help of a branch and they started making a sound. उन्होंने एक branch को दोनों trees से join करे और वो sound बनाने लगे as a guitar type. What a wonderful musical band you make, said Mowgli. What did Mowgli said? कि आप लोगों ने सब ने मिलके कितना ब्यूटीफुल कितना वंडरफुल बैंड बनाया है कि आप हमारे पास सिंगर भी है, म्यूजिक में ड्रम भी है, गिटार भी है, रैटल्स भी है. वी हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और म्यूजिक क्या हो गई हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और सुनने में क्या लग रही है वो एकदम ब्यूटीफुल. So Mowgli sang his song and the monkey band played along with him. So then what did Mowgli do? Mowgli ने क्या किया? He started singing. He started singing the song and monkeys started playing the music according to the song. Monkeys ने क्या किया? जैसे वो song गा रहे थे उसके हिसाब से music play करना start किया. The sound of the band was so good that Bhalu just had to dance and sing along. Sound इतना good था, इतना beautiful, wonderful song था कि भालू क्या करने लगा? भालू started dancing. Doobie doo, da doobie doo. What was the song? Doobie doo. What a lovely time they had. So they loved. What did they do? The three friends like Bhalu, Mowgli and monkeys spent a good time. Means उन्होंने अपना time कैसे good, happy, enjoy करते हुए अपना time spend किए and it was a very lovely day. It was a very nice day. उनका day कैसा था वो time? Very nice and very lovely. So here first just take pencil in your hands. आपके हाथ में pencils रहेंगे. I will just give you the hard words. So let me change the color before giving you the hard words. I will take dark blue. Okay, so you can understand it very well and you can mark the hard words in your worksheets. So you have to mark all the hard words in your worksheet. Okay, just a second. 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 Okay,
just follow my dark blue color and just underline the words. The first word is Mowgli. You have to, I'm making the box around the words so that you should understand very well. मैं words के around box बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके what is the hard word. That is Mowgli, Mowgli. Next is Little, little. The second word is Little, little. Then the third word is Libed, lived. Libed, lived. I and in the jungle, Jungle, jungle. Next is one day he was walking. So next word is Walking, walking. Walking, walking. Next word is singing. Singing, singing. Singing. Happy, happy. Happy. Balo, bhalu. Okay. Beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful. So आपको वही वर्ड्स अंडरलाइन करना है जो मैं आपको ब्लू पेन से बॉक्स फॉर्म करी. ओके, नाउ आई विल रीड द वर्ड्स. मैं आपको वर्ड्स रिपीट करती हूँ. मोगली, लिटिल, लिफ्ट, जंगल, वॉकिंग, सिंगिंग, हैप्पी, भालू, ब्यूटिफुल. ओके, so the next word is music. music, music. Okay, next page. Then again suddenly, suddenly. suddenly, suddenly. sound, sound. sound, sound. Next is monkeys. monkeys, monkeys. monkeys, monkeys. screaming, screaming. screaming, screaming. shouting, shouting. shouting. heard, heard. heard. chattered, chattered. chattered. Next is laughed, laughed. Laugh means hasna, ha ha ha, is known as laughing. Next is jumped, jumped. jumped. lying, lying. lying. ground, ground. Next is they hit it with their hands and made a nice sound. Okay, then brought, brought. brought. Rattles, rattles. 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 Branches, branches. branches. Next is wonderful, wonder, full, wonderful. wonder, full, wonderful. sang, sang. lovely, lovely. lovely. Okay,
सो दीज ब्लू, जो वर्ड्स ब्लू बॉक्स में है आप वही वर्ड्स राइट डाउन करेंगे एज एन हार्ड वर्क, ओके, इन योर रफ बुक, इन योर होमवर्क बुक एज इट इज. Next is your meanings, okay. HOLLOW, hollow. HAVING, having. EMPTY, empty. SPACE, space. INN SID, having empty space inside, okay, is known as hollow. hollow का मतलब क्या है? खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे? inside a box, inside a bottle or inside anything is known as hollow. LOG, log. PART, part. OF, off. TREE, tree. TRUNK, trunk. THAT, that. HAS, has. FALLEN, fallen. OR, or. HAS, has. BEEN, bean. CUT, cut, okay, is known as log, part of a tree trunk that has fallen or has been cut. मतलब ट्री का कोई भी पार्ट ऑफ अ ट्री, ट्रंक का पार्ट जो गिर गया या उसको कट कर दिया, is known as log. Next is guards. FRUITS, fruits with hard. WITH, with. HARD, hard. SHELLS, shells, okay, fruits with hard shells. मतलब जो fruits उनका outer cover क्या है? hard है, उसको हम क्या बोलेंगे? guards, okay. We called it as guards, like nuts, you know, nuts, cashew nuts, और no, you call it अखरोट, okay. अखरोट का जो outer cover रहता है वो कितना hard रहता है, and inner cover it is very soft, so it is known as this type of, ऐसे type of fruits को हम क्या बोलते हैं? guards. rattles. TOWS, toys. THAT, that. MAKE, make. SOUND, sound. WHEN, when. THEY, they. ARER, SHAKEN, shaken. toys that make sound when they are shaken. तो रैटल्स किसको बोलते हैं? ऐसे टॉयज जो साउंड बनाते हैं जब हम उसको क्या करते हैं? शेक करते हैं. बैंड. MUSIC, म्यूजिक. GROUP, ग्रुप. बैंड मीन्स अ म्यूजिक ग्रुप, ओके. I hope you understood what you have to write. Now this is your homework. Read the chapter. You have to read the chapter The Monkeys Orchestra. Learn and write meaning. These are the meanings which is given in your study material also. जो ये meanings आपके study material में भी दिए. If you are not finding, अगर आपको मिल नहीं रहे तो आप ये you can pause the video and you can copy the meanings. आप video pause करके meanings copy कर सकते हो, okay. Next is now learn and write hard words which I showed you in the boxes. I made the boxes for you so you can understand very well. जो boxes में words हैं आपको वो लिखने हैं as in hard words. Learn and write 10 names. Learn and write names of 10 instruments. Which would you like to play? आपको 10 instruments के name लिखना है only one time. Which you like to play? Like you like to play, I like to play drum, or I like to play rattles, anything. Whichever instruments you like to play, you have to write the name, the 10 instruments, okay. Thank you and see you in the next lecture.